गोवा में एक बार फिर मोल्लम नेशनल पार्क बचाने के लिए गोअन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दिस रिक्वायर्स योर अर्जेंट अटेंशन बिकॉज द अथॉरिटीज आर जस्ट नॉट गिविंग अप इन देयर एफर्ट्स टू डिस्ट्रॉय आवर जंगल्स इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। इस पर पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं। पीपल ऑफ गोवा हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द डबल ट्रैकिंग ऑफ द रेलवे लाइन इनसाइड द मोल्लम नेशनल पार्क फॉर सम इयर्स नाउ। इवन सुप्रीम कोर्ट तक ने इसके अगेंस्ट रूलिंग दी है, लेकिन अथॉरिटीज हैं कि डटी हुई हैं। न्यूज है कि एक फ्रेश प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है टू रीअप्लाई फॉर परमिशन फॉर द डबल ट्रैकिंग ऑफ द रेलवे लाइन। इसके लिए द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII को एक नया एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट सर्वे कंडक्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए WII इज सेट टू रिक्रूट साइंटिस्ट हु विल कंडक्ट दिस सर्वे। लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए, इस रेलवे लाइन की डबल ट्रैकिंग के प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी 2 बार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज कराई जा चुकी हैं, वन बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड द अदर बाय द WII itself, and these studies were flawed. Scientists came together and thoroughly studied the railway EIA and found severe loopholes with respect to incorrect reporting and misidentification of species in Mollem. Government ने WII को पहले भी अपॉइंट किया था to suggest mitigation measures for the project. Scientists also critiqued these mitigation measures and found these to be irrational, ignoring any signs on animal movement. And that's not all. Even Supreme Court की appoint की गई Central Empowered Committee (CEC) submitted their report on this project, which clearly said that double tracking should not happen as there is no ecological or economic justification for this destruction. CEC ने अपनी detailed report में कहा that this double tracking will increase the number of trains on this route and there will be wider openings, and that will further fragment the habitat. Movement of wildlife across the railway line will become difficult and dangerous, which will result in high casualties. And the Supreme Court acknowledged this by scrapping the railway clearance. मतलब इन सब रिपोर्ट्स के बाद एक बात तो क्लियर है, राइट? A project of this nature will destroy the fragile ecosystem of our western ghats. वो western ghats जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है as one of the 8 biodiversity hotspots of the world. It is also one of the most important wildlife corridors of the country. But apparently authorities को ये समझ नहीं आ रहा, या of course वो समझना ही नहीं चाहते। और ये प्रोजेक्ट इस रीजन के बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगा। The double tracking will bring destruction to the homes and livelihoods of thousands of villagers who live in this area. Scientists from across the board who have worked with the Mollem movement have expressed their support with the people of Goa. और इस नई EIA स्टडी कराने पर उनका भी यही कहना है कि what's the purpose of this new study when the CEC appointed by the Supreme Court has already called this railway line economically and ecologically unjustifiable. Wildlife Institute of India ने already scientists की recruitment शुरू कर दी है. They have put out advertisements in the newspapers for the same. This is to put together another comprehensive brand new EIA for the same project that has already been studied and documented over the last 2 years. Well, we can just hope कि जो scientists इस study के लिए recruit होंगे, they make a reasonable decision and not just create an entirely new EIA. Because if that happens, it will undo the efforts of an entire community that has been fighting to prevent the destruction of their forests. Our forests. There is enough scientific evidence that this project will have an irreversible negative impact on the environment and the wildlife. People are still fighting on ground and they will continue to do so. What can you do to help? You can spread the word. Write on your social media handles urging scientists to say no to these jobs. Share this video with as many people as possible. And write in the comments below what you think about what's happening in Goa.